हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यस, टुडे लेट अस कंप्लीट योर लेसन। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 12.1 and 12.2 together. Okay, let us start. Exercise 12.1 first mean. So in first mean I have selected two questions here, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सही से देख लेना, फिर बुक में जाके कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सी द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो इवैल्यूएट 3 raised to -2. So here I have written all the laws of exponents. Just recall the exponents laws. Okay, just recall a raised to m into a raised to n. Yes, let us read with me everybody. Yes, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m minus n. A raised to m by a raised to n is equal to a raised to, yes, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. A raised to m by a raised to n is equal to a raised to m minus n. A raised to m whole raised to n is equal to a raised to m into n. A raised to m into b raised to m equal to a into b whole raised to m. A raised to m by b raised to m equal to a by b whole raised to m. A raised to 0 is 1 and a raised to minus m is 1 by a raised to plus m. So these laws are only going to help you to solve the exercise. Let us see. तो यहाँ पे 3 raised to 2. This 3 raised to 2 is in which form? Yes, it is in the form of a raised to minus m. Yes, just write the law here. It is in the form of a raised to minus m. So see, while solving the question, आपको law लिखना पड़ेगा. Okay, sometimes your law also gets half marks. तो आपको law के बिना नहीं कंटिन्यू करना. You have to write in the bracket or you can write like this as well. But you have to write the law. सो ए रेज टू माइनस एम की फॉर्म में है, जो कि हो जाएगा आपका ए रेज टू 1 बाई ए रेज टू प्लस एम हो जाएगा. तो ले लो आपका टर्म 3 रेज टू -2. ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 3 रेज टू 2. यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, हमें लॉ पता है, बस हम अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से कर रहे हैं. ओके, 1 बाई 3 रेज टू 2 हो जाएगा. तो 1 बाई 3 रेज टू 2 का मतलब क्या हो रहा है? 3. 1 बाई 3 multiplied how many times? 2 times. 3 into 3. 2 times multiplied हो रहा है यहाँ पे 3. So 1 by 3 into 3 क्या हो रहा है बेटा? 3 into 3 is 9. 3 3s are 9. So this is your answer. Clear? चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. Now this is 1 by 2 raised to -5. अगेन यही लॉ को हम थोड़ा सा अल्टर कर देंगे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है आपको. अगर 1 बाई ए रेज टू माइनस एम आ रहा है, 1 बाई ए रेज टू माइनस एम आएगा आपका द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, तो आपको क्या करना है? ए हो जाएगा आपका ए रेज टू एम. बस यही लॉ है, कुछ नहीं, चेंजेस नहीं है यहाँ पे. ओके, तो ए रेज टू माइनस डिवाइडेड 1 बाई ए रेज टू माइनस एन कैन बी रिटन एज ए रेज टू एम. तो ये हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द लॉ 2 रेज टू 5 हो जाएगा ए. ओके, वाई? बिकॉज 1 by 2 raised to 5 becomes 2 raised to 5. According to 1 by a raised to minus m becomes a raised to m. Yes, it means your 2 is multiplied how many times? 5 times. 3, 4, 5. It becomes 32. Your answer is 32. तो चलिए चलते हैं सेकेंड मीन की ओर. So second mean, evaluate. First one question is -4 raised to 4 divided by -4 raised to 8. बेटा यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं, बस आपको देखना है बेस सेम है या एक्सपोनेंट सेम है. हियर 4 4 मतलब बेस सेम है आपका. डिवाइडेड, इट इज डिवाइडेड. सो बेस सेम एंड डिविजन, विच टर्म इज दैट? दिस टर्म a raised to m by a raised to n can be written as a raised to m minus n. Yes, write that law here. Always you have to mention the law. It is in the form of a raised to m by a raised to n. So it can be written as a raised to m minus n. ठीक है? According to this law, you can write it as
माइनस 4 रेज टू यम, मतलब फर्स्ट पावर माइनस अकॉर्डिंग टू द लॉ माइनस ऑफ n, मतलब सेकेंड. ओके, इट इज नाउ माइनस 4 रेज टू 4 माइनस 8 इज 8 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो रहेगा आपका 4 एंड योर बिगर डिजिट इज हैविंग माइनस साइन, यू हैव टू पुट द माइनस साइन. नाउ यू गॉट माइनस 4 रेज टू minus 4. This term is in the form of what now? This is in the form of a raised to minus m. It can be written as 1 by a raised to m. So write the law here. A raised to minus m की फॉर्म में है तो it can be written as 1 by a raised to m. तो हो जाएगा आपका 1 by a वैसे ही रहेगा -4, इसको कोई साइन चेंज नहीं हो सकता है. -4 रेज टू जो -4 था हो जाएगा +4. Again, if you want to simplify that, you can multiply 1 by -4 into -4 into -4 into -4. Otherwise, you can keep like this as well, depending on the question. Okay. Now let us see the third question of the second main. Okay. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? -3 raised to 4 into 5/3 raised to 4. तो इसको देखो बेटा, इस 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मुझे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे +3 नजर आ रहा है ना. सो अगर इसको भी मैं +3 बना दूंगी तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा. सो आई वांटेड टू मेक बेस सेम, सो आई विल राइट this as, don't get confused, this is next question. Okay, I will write this term as -1 raised to 4 and 3 raised to 4. सही हो जाएगा ना? Is it correct? Yes. 3 into -1 is -3 and raised to 4 मतलब 4. Yeah. Okay, this is correct. And this is in the form of a by b whole raised to m. Then it can be written as a raised to m divided by b raised to m. तो ये हो जाएगा आपका according to the law 5 raised to 4 divided by 3 raised to 4. -1 multiplied 4 times. Then what is the answer? You will get +1. -1 into -1 into -1 into -1. You will get +1. +1 का मतलब होता है +1 into 3 is 3 only. So I will not take this term. Why? Because I know this term value is 1. Okay, now you can see here in the numerator 3 raised to 4 multiplied with 5 raised to 4 and in denominator 3 raised to 4 is there. Now you can see this two term divided together. Now it is in the form of, see base is same. It is in the form of a raised to m by a raised to n. Yes, you can ask me here, ma'am, even power is same. No issues. Any one law you need to apply here. Okay. So a raised to m, a raised to n can be a raised to m minus n. So it can be, okay, 3 raised to 4 m minus n minus 4. तो ये टर्म इसके साथ में डिवाइड हो चुका है. Remaining is 5 raised to 4. 3 raised to 4 minus 4 is 3 raised to 0. Into 5 raised to 4. Again one law came here, that is a raised to 0 is 1. So this term is 1. So that your answer is 5 raised to 4. Hope this is clear regarding this. Now second main fourth question. 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power 10 multiplied 3 raised to the power 5. ठीक है. तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है. ब्रैकेट इज व्हाट? इट इज ए रेज टू, बेस सेम है ना? यस, ए रेज टू m डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवीजन, डिवाइडेड बाय ए रेज टू n. मतलब आप अगर आपको इस टाइप में चाहिए तो आप लिख सकते हो इसको. इट इज 3 रेज टू -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू -10. This term multiplied with 3 raised to -5. Okay, ऐसे है ना ये वाला टर्म? यस. तो अगर आप इसको देखोगे, इट इज इन विच फॉर्म? इट इज इन द फॉर्म ऑफ a raised to m by a raised to n. So a raised to m by a raised to n, you know it is a raised to m minus n, है ना? तो ये हो जाएगा आपका
3 रेज टू द पावर यम, यम है कौन सा वैल्यू -7, अकॉर्डिंग टू द लॉ माइनस इट इज माइनस ऑफ, अगर आपका वैल्यू n भी -10 है, इट इज -10 and multiplied this term 3 raised to -5, keep as it is. Now simplify 3 raised to -7, minus into minus becomes +10. So 10 minus 7 is 3. Yes. So 3 raised to the power 3. Positive हो जाएगा वहाँ यहाँ पे, why? Because minus into minus becomes plus. So bigger digit is having plus sign. So +3 into 3 raised to -5. Now again base are same. Your exponent is different. It is in the form of a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n फॉर्म आपका आ रहा है यहाँ पे. तो a हो जाएगा आपका a raised to m is 3 and plus according to the law your n is -5. Don't leave the sign, you have to carry the sign as well, don't get confused. 3 raised to 3 plus minus, plus and minus becomes -5. 5 minus 3 is how much? 2. 3 raised to 2. But sign is which one here? Bigger digit sign is minus. So ये हो गया आपका -2. This is again in the form of a raised to -m. तो इसको आप क्या लिखोगे? 1 by a raised to m लिखोगे. ये तो हो जाएगा आपका 1 by 3 square. If you want to simplify this again, you can write it as 1 by 3 into 3, that is 1 by 9. Hope this is clear. So this is the third main of this exercise. Find the value of. So I have taken here 3 questions. Let us solve one by one. First question is 3 raised to 0 plus 4 raised to -1 multiplied with 2 square. So you have to solve the bracket first. This term is in the form of a raised to 0. It is 1. So apply this law. So it can be 1, ठीक है, 1 हो जाएगा प्लस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a raised to -m, तो हो जाएगा 1 by a raised to m. ठीक है, a हो जाएगा 1 by 4 raised to 1. 4 raised to 1 is 4 itself. ठीक है, a आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया. दिस वन कीप एज इट इज. ठीक है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. अगर नथिंग इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर इट मींस 1 इज प्रेजेंट. ओके, 1 plus 4 and 1 and 4 LCM is 4. To get here 4 we multiplied 1 with 4, so 1 into 4 is 4 plus 4 into 1 is 4, so that 1 into 1 is 1. You know how to solve the LCM. Okay, into 2 to the power 2. ठीक है, तो it can be 4 plus 1 is 5 upon 4 into 2 raised to 2 हो जाएगा. ठीक है, आपको आइदर फ्रंट करना है या तो डाउन ही करना है ऐसे. ओके, आई एम हियर चेंजिंग सम टाइम प्लेसेस क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है. अगर लिखूंगी भी तो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया में लिख रही हूँ. लाइक 5 2 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. यस, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है. Now see this term 2 raised to 2, 2 raised to 2, same it is. So you can consider here a raised to m by a raised to n law, which can be a raised to m minus n हो जाएगा यहाँ पे, है ना. So 5 into 2 raised to m minus n, 2 raised to 2 minus 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना. तो 2 raised to 2 minus 2 is again 0. So 5 into 2 raised to 2 is 2 raised to 0. This is again in the form of a raised to 0. So a raised to 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1. a raised to 0 is 1. तो ये term completely 1 हो जाएगा. So if this term is 1, remaining is what? 5 is the your answer. Hope clear हो चुका है. Is it clear? Yes. Let us take your second question. देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 है ना. यस, थर्ड मेन में थर्ड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है. ओके, जो डिफिकल्ट दिख रहा है बस वही मैंने चूज किया हुआ है. रेस्ट ऑल क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व बाय योर ओन. टेक क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज इट? 1/2 रेज टू -2 into 1/3 रेज टू -2 इंटू है या प्लस है? या प्लस है.
टर्म इज प्लस, ठीक है, प्लस 1/4 रेज टू -2. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a/b होल रेज टू m. तो ये हो जाएगा आपका a रेज टू m by b रेज टू m. अकॉर्डिंग टू उसी के आपको लिखना पड़ेगा. इट इज 1 रेज टू -2 by 2 रेज टू -2 प्लस 1 रेज टू -2, 3 रेज टू -2 प्लस 1 रेज टू -2. ब्रैकेट डाल के लिख दो बेटा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज समटाइम. ठीक है, 1 रेज टू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू -2. You know that this is again in the form of a raised to -m. तो यहाँ पे a आ जाएगा डाउन में. This term, complete term, is in the form of 1 by a raised to m. So you can apply here a raised to m. A raised to -m is 1 by a raised to m for numerator. If you can see the numerator. For without numerator, you can take only denominator, or you can do one more thing here. -1 into 2 times, मतलब -1 into -1 is +1, right? That only better to take. 1/2 raised to 2 रह जाएगा यहाँ पे, plus 1/3 raised to -2 plus 1/4 raised to -2. Yeah, this is becomes easy for you. Okay, now it is in the form of 1 by a raised to -m. तो ये हो जाएगा आपका a raised to m. So all the terms goes in the numerator. So 2 raised to 2 हो जाएगा plus 3 raised to 2 plus 4 raised to 2. Okay, according to the law. Yes, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. So 16 plus 4 20 plus 9 is 29 is your answer. Okay, now let us take the last fourth one of this main. What is the question? देखते हैं क्वेश्चन क्या है. So question is 3 raised to -1 plus 4 raised to -1 plus 5 raised to -1 whole raised to 0. बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं. Looks like a difficult, but you know that a raised to 0 is equal to 1. So this complete term is considered as a. Then a raised to 0 is 1. Answer is 1. Hope this is clear. Let us move to the next main. Fourth main, evaluate 8 raised to -1 into 5 raised to 3 divided by 2 raised to 4. So you can, if any bigger number is given to you, then you have to factorize that number and you have to write that particular number in the form of prime factors. Okay, so 8 can be written as 2 2s are 4, 4 2s are 8. Can we write it as 2 raised to 3? Yes, it is 2 raised to 3. 8 is 2 raised to 3. Power 1 keep as it is, multiplied 5 raised to 3 as it is, divided by 2 raised to -4. This is 3 into a raised to m whole raised to n is a raised to m into n. Okay, so a raised to m whole raised to n is a raised to m into n. Write the law. Then it can be 2 raised to 3 into -1 is -3 multiplied by 5 cube divided by 2 raised to 4. Now see here, base is same 2 2. Yes, can we simplify this? Yes, this is in the form of a raised to m by a raised to n. Then it is a raised to m minus n you have to do. So 2 raised to m is -3 minus, according to the law, n is -4 into 5 raised to 3. Okay, 2 raised to -3 minus into minus becomes plus 4. So -3 plus 4 is +1. So 2 raised to 1 into 5 raised to 3. Again you cannot apply any law here. Now directly you can simplify. 2 into 125 is 5 5s are 25 5s are. Okay, it is 250. Your answer is 250. Fifth main, find the value of m for which 5 raised to m divided by 5 raised to -3 equal to 5 raised to 5. Here we want this value, m value we have to find. तो क्या करना पड़ेगा? This is in the form of a raised to m divided by a raised to n. Yes, ले लो वो वाला law आप. a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n हो जाएगा. डिविजन है ना यहाँ पे? Yes, तो हो जाएगा आपका 5 raised to m minus, according to the law, n. n मतलब आपका सेकेंड
पावर एक्सपोनेंट, ठीक है, इक्वल टू 5 रेज टू 5, टेक एज इट इज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 रेज टू m माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो m प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज टू 5. Then see here both the bases are same here now, so just eliminate the base and compare the exponent. Compare exponents both side. So take the exponents only. ठीक है, यहाँ का एक्सपोनेंट क्या है, दैट इज m प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज टू 5 में एक्सपोनेंट कौन सा है, 5 है. सो m वैल्यू वी वांट, m हियर की एज 5 यहाँ पे रहेगा, ये प्लस 3 उस साइड चला जाएगा तो इट बिकम्स माइनस 3, सो दैट m इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2. द m वैल्यू इज 2. होप दिस इज क्लियर. Yes, let us see the next question, that is 6th main. Evaluate. So this is question number 1 in the 6th main. ठीक है, evaluate this term. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a by b whole raised to m. a by b whole raised to m can be written as a raised to m by b raised to m, है ना. तो according to this law you can write it as 1 raised to minus 1 by 3 raised to minus 1. Okay, by 3 raised to minus 1 minus 1 raised to minus 1 by 4 raised to minus 1. Now according to the law, a raised to minus m can be written as 1 by a raised to m, and 1 by a raised to minus m can be written as a raised to m. तो ये completely reverse हो जाएगा with the positive sign. तो डिनोमिनेटर आएगा आपका न्यूमरेटर में विथ पॉजिटिव पावर एंड डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर विथ द पॉजिटिव पावर. सो इट इज 3 रेज टू प्लस 1 divided by 1 raised to plus 1. So 1 raised to plus 1 is 1, so I will not write here, again divided by, so it becomes 4 raised to plus 1. So 3 4 रह गया, plus 1 is that same number, so I will not write, and complete bracket ये हो गया हमारा सॉल्व. यहाँ पे complete bracket raised to minus 1. तो 3 minus 4 is minus 1 raised to minus 1. Again this is in the form of a raised to minus m. Again it can be written as 1 by a raised to m. So that is 1 by minus 1 raised to 1. मतलब minus 1 हो जाएगा यहाँ पे. 1 raised to 1 is same it is. So 1 by minus 1 is minus 1 itself. So the answer is minus 1. Hope this is clear. The last question of your exercise 12.1. 7th में simplify 25 into t raised to minus 4 upon 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to 4. तो इन दोनों के लिए आप एक लॉ अप्लाई कर सकते हो, दैट इज a raised to m by a raised to n इक्वल टू a raised to m minus n. तो अभी तक आपको प्रैक्टिस हो चुका है, तो एट ए टाइम 2 to 3 लॉज आप अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो विदाउट कैरिंग स्टेप बाय स्टेप लाइक एक एक लॉ अप्लाई करके एक एक. नो, you can apply 2 to 3 laws at a time and you can simplify, and you can simplify 25 can be written as, I told you, if a bigger number is given you have to write in the form of prime factors. So 25 can be written as 5 5s are 25, 5 square we can write it as, and 10 can be written as 10 2s are, sorry 5 2s are 5 into 2 we can write this. So and we will apply this to this. Okay, it becomes what now, 25 is 5 square, 5 5s are 25 into इस वाले को मैं a वाला लॉ अप्लाई कर रही हूँ, a raised to m minus n. m is minus 4 minus n is this minus 8. ओके, a वाला टर्म हो गया हमारा खत्म. तो रह गया क्या अभी यहाँ पे 5 raised to minus 3 रह रहा है यहाँ पे, into 10 can be written as 5 into 2. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना. तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. इट कैन बी 5 स्क्वायर इंटू t raised to minus 4, minus into minus becomes plus 8. So plus 8 minus 4 is plus 4. Why? Because bigger digit is having plus sign. Minus into minus is plus. तो यहाँ पे रह जाएगा t raised to plus 4 divided by, now you can see here a raised to m, if nothing is there means raised to power 1 is there. Okay, so 5 raised to minus 3 into 5 raised to 1, it is in the form of
a raised to m into a raised to n, that is a raised to m plus n. For denominator you can apply a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a raised to मतलब 5 raised to m प्लस, ठीक है, m प्लस n मतलब 1 मल्टीप्लाइड 2. So it is 5 raised to 2 into t raised to 4 upon 5 raised to minus 3 plus 1 is minus 2. 5 raised to minus 2 into 2. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया. Now again this term is in the form of a raised to m upon a raised to n equal to a raised to m minus n, है ना. लॉ को ब्रैकेट डाल दो बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा आपको, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वाला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यू कैन राइट 5 raised to m is 2 minus n is minus 2, ठीक है, into t raised to 4 keep as it is divided by 2 is remaining here 2 as it is. 2 raised to minus into minus becomes plus, so 2 plus 2 is 4. So 5 raised to 4 into t raised to 4 divided by 2 is remaining. This is 5 raised to 4 is 5 into 5 into 5 into 5. So 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625. तो ये हो जाएगा आपका 625 into, फिर क्या रह रहा है यहाँ पे, t raised to 4 divided by 2. तो ये हो गया आपका आंसर. Let us move to the next exercise, that is exercise 12.2. So 12.2 फर्स्ट मीन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े नंबर दे दिए हैं. यू हैव टू मेक इट स्मॉल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ था, अगर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 to the power डिवाइड हो जाएगा. यू विल राइट 10 to the power in the form of minus. अगर बड़ा वाला नंबर मतलब 0 comes in front of the number then it is the biggest number, then it can be converted in the form of plus 10 to the power. Okay, plus power. So आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो देख लेना एंड कम टू हियर. सो हियर सी आई वांटेड टू राइट दिस टर्म एज 8.5. तो मैंने यहाँ से जो यहाँ पे था उसको मैंने यहाँ पे ला दिया है. कितने टर्म पीछे ला रही हूँ मैं, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट. डेसिमल मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, पहले डेसिमल आ रहा है, इस स्मॉलेस्ट नंबर मतलब यहाँ पे 10 to the power आपका डिवाइड होने वाला है, 10 to the power डिवाइड होने वाला है. यस, सी आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव शिफ्टेड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes, I shifted here, it becomes 10 to the power of 12. So ये हो जाएगा 1 by a raised to plus m can be written as a raised to minus m. 8.5 into 10 to the power of minus 12 is the correct answer. तो यहाँ पे भी आपको मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करवाना चाहती हूँ, 9.42 लिख दूंगी. जैसे भी आप चाहे लिख सकते हो इसको, ऐसा नहीं है कि as I wrote ऐसे ही आपको नहीं लिखना है. however you want, if you want to write here 85 then one more place के बाद में ले रहे हो, it becomes 10 to the power of 13. okay, if you want 0.85 then एक स्टेप पीछे रह गए हो आप, 10 to the power of 11. hope you understood. yes, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखना चाहिए. if you want to write 94.2 you can write, okay, or you want to write 0.942, yes, it is up to you, but we have to make the biggest number in the form of standard form, smallest form. ठीक है, it becomes again you know that it is the smallest number, decimal is here. okay, so divided by 10 to the power of, I shifted till here, so count it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. again here comes 12, so again it goes to the up, means it becomes a negative power. 9.42 into 10 to the power of minus 12. This is the answer. Now see, this is the biggest number, मतलब नंबर के सामने यहाँ पे 0 आ रहा है. This is the biggest number. Yes, I wanted to write it as 6.02. 6.02 मुझे लिखना है यहाँ पे. Okay, मतलब कि यहाँ पे
डिवाइड नहीं होगा, कोई मल्टीप्लाई होगा। अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिलेगा हमें। जस्ट यू हैव टू काउंट वेयर आई हैव केप्ट द, here I have kept the decimal point. It means from here you need to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 into 10 to the power of plus 15 होगा because it is a biggest number. Yes, let us see the next question. Question number 2, express in the usual form. Here standard form is given to you. You have to express it in the form of usual form. Yeah. So as you know, minus power means 0 comes back of the number, plus power means बड़ा हो जाएगा नंबर, मीन्स नेक्स्ट टू द नंबर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, मतलब नंबर के पीछे जीरो आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मतलब नंबर के पीछे जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको काउंट करना है, 6 zeros डालना है बस आपको। इट बिकम्स 302 यहाँ आ जाएगा आपका, एंड यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, आपको पता है ना। तो 3 को भी काउंट करना है क्योंकि ए वाला डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल के प्लेस से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 टू द पावर ऑफ -6 है ना। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये तो आपका रखना ही है, यू नो दैट 0, अदरवाइज दिस इज अ मीनिंगलेस। ओके, 0 पॉइंट एंड दिस टर्म, दिस इज द usual form. And now plus positive sign is there, positive power is there, it means 0 आपके नंबर के सामने आ रहा है, coming in front of the number, it becomes the biggest digit. So ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 decimal point है, then 4 5, मतलब यहाँ से आपको एलिमिनेट करना है डेसिमल, but 4 places are there, एक हो गया a, why, because it is after the decimal, so this is 1 2 3 4, 10 to the power of 4. So 3 0 अगर डाल दोगे तो 4 places cover हो जाएंगे. This it becomes 45,000. This is question number 2. Then question number 3 में भी ऐसे ही करना है. I have taken only one question here so that you will understand how to solve. Express the following following number appearing in the form of statement. Statement के form में दिया है, but you know the value or the meaning of the following statement, then you can easily convert the statement into a usual form. You have to convert it in the standard form, not in the usual form. So 1 micron is equal to 1 upon 10 to the power of 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6. You should know the value. Okay, it can be written as 1 upon 10 to the power of 6. ओके, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी 1 अपॉन ए रेज टू एम कैन बी रिटर्न एज ए रेज टू -m, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6. सो दिस इज द आंसर. इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द थर्ड में. लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लेसन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर. ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. There is a stock. In a stock, there are 5 books. Stock means you can consider any cupboard or anything. Okay, like a box or anything. So there are 5 books. 5 books are there, and 5 papers are there. Okay, 5 books or 5 paper and 5 papers are there. Each book thickness and each paper thickness is given to you. You have to find the complete thickness of the stock. Complete thickness of the stock you have to find. Let us see. First find the thickness of 5 books. Then find the thickness of 5 papers. Add together, you will get complete thickness of the stock. So thickness, how many books are there? Solution. Number of books, how many are there? 5. ठीक है. Thickness of each book, thickness of each book is 20 mm, 20 millimeter. Then total thickness of, और हाँ, total thickness of 5 books. What you have to do? You have to multiply 5 into 20, which is 100 mm. समझ में आ रहा है ना बेटा? Nothing. 5 बुक्स है यहाँ पे आपके. ईच बुक का आपका
थिकनेस है 20 mm, तो 520 you have to multiply, you will get the thickness of 5 books, that is 100 mm. Now how many sheets are there? Number of paper sheets, how many are there again? 5 are there. Each thickness, each paper sheet thickness, तो आपको फुल स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा बेटा. ओके, डोंट राइट इन द सिंपलेस्ट वे. It is 0.016. Now total thickness of paper. So number of papers into the thickness of one paper. You will get 5 into 0.016 is 0.08 mm. ठीक है. So now you got the thickness of 5 books, that is 100 mm. Thickness of 5 paper, that is 0.08 mm. So you have to find the stock thickness you have to find. So therefore thickness of stock is thickness of books plus thickness of 5 papers equal to 100.08 mm. This is the answer. होप आपको इस लेसन के बारे में कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा, है ना. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब तो कर लो भाई. यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू लेसन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.